Hey there, good evening. Hope I'm audible and visible as well. So we have been doing so many marathons these days. Even I have lost count. How many were they? 4, 5, much more. Huh? I think 4, right? Continuously. Yesterday I did Quant PYQ. Before that, LRDI. For MSCT specifically, I'm talking about. Before that, reading comprehension. Before that, entire quants. Then it will be total focus on algebra, and somehow I have kind of gathered a reputation in algebra. Unknowingly that people are like, okay, sir, algebra, पढ़ा दो बस, है ना, मजा ही आ जाए. So here I am with algebra. How many are there? Just say a hi to me, everybody. We'll be doing 100 questions. 100 questions. So the entire algebra will be over. And after watching all these marathons, your MSCT will be a cakewalk. Moreover, in the marathons, I'm not going to teach you the entire theorem because we don't have time for that, obviously, and we have to do 100 questions. So quickly, I'll do the questions. For one question, I'll be having the timer of 3 minutes. Now it's 3 minutes, so 1 minute, 1.5 minutes to you, 1.5 minutes for me to explain, provided nobody has some extra questions. So in 3 minutes, we'll be completing one question, right? That is what we're gonna do. All right. So are you excited now? Let's start, everybody. Algebra mastery quiz. So there's the first. So if you see, I have 3 slides open over there. Algebra 1, Algebra 2, Algebra 3. ऊपर दिखाई दे रहा है. In Algebra 1, we'll be doing surds and indices, linear equations, quadratic equations, 10 questions, each with 5 options, which is relevant to MHCET. All right. So, everybody, who all are there? All right. Let me just see how many are joining here. Gaurav, hi. Chalo, let's start. Shreya Gupta. Hi, Shreya. So this is highly relevant for GMAT as well, because you know what? In GMAT and MHCT, we have 5 options each. And this will be totally applicable to MHCT, and for the people who can watch for GMAT as well. For GMAT, I can say this will be like 600 level questions, not 700 or 800. It will be 600 questions level. Okay, so still, it's going to help you a lot. So let me start the timer now. Timekeeper, I've started. I'll make it 3 minutes. Okay, we won't be talking a lot. We'll just start the main agenda. Here we go. Surds and indices, question number 1. Maximum 1.5 minutes for every question. By the way, this question would not require more than a minute, because when we finish off 100 questions, we'll be doing it real quick.
Okay, root 50. What exactly is root 50? 50 is 25 into 2. All right. And 18 is 9 into 2. Why I wrote like that? Because I need perfect squares, right? And that is the only way I can have the square root outside. Hi Aditya. So 25 into 2, if I take the root of it, 25 by square root is 5. So 5 root 2 is what I get, because 2 ka square root is square root 2 only. And 9 into 2 is 3 root 2. So let's add them. I'm getting 8 root 2 as the final answer. That's all. Go to next one. The exact level of questions will be asked in MAHCET. Those who are preparing for CAT, it will be applicable to them as well, because there is going to be the easy level of CAT. For GMAT, it's moderate level. For MAHCET is the most relevant level. Okay. Whenever the power is 1 by 3, it basically is asking about the cube root. If the power is 1 by 2, it's basically square root. If the power is 1 by 4, it's basically the fourth root, and so on. 64 to the power 1 by 3 is cube root. You need to find that which number, when cubed, gives 64. It's 4, right? Okay, Gaurav. So 4 into 4, 16 is the final answer. That's all. Nothing else. Nothing more to be done here, right? Why? Because I can write 64 as 4 cube, and we have power 1 by 3, and 16 as 4 square, power 1 by 2. As you see, powers get cancelled out. So all that remains is 4 into 4, that is 16. Well done. Let's go to next one. Here we are. 3 minutes, 1 minute for you. This is pretty simple. I'm giving you exactly 30 seconds to mark this answer. A marathon should feel like a marathon, right? Thirty seconds up. So it happens whenever you have something like this, a to the power m upon a to the power n. When the bases are same, okay, and the powers are different, and we divide that, powers get subtracted. That's the only thing. Moreover, if the power is if we multiply them, then powers get added. So m minus n, 5 minus minus 2. 5 minus minus 2 is 7. We'll go for option C. Some people might get confused here. Even if it's an easy question, they might subtract 5 and 3 and get 5 and 2 and get 3. It's basically 5 minus minus 2. So we get 7. Cool. So x to the power 5 minus minus 2. That is x to the power 7 and nothing else. Done. Next question. Expression blur aa raha hai. Is it for Gaurav or everybody else? Because I can see it's clear. Like I'm running it on my different uh, window, and I can see it's pretty clear. Nothing is blurred. Maybe there is some kind of bandwidth issue at your end. So 3 to the power x plus 1. Now, either the power should be same or the base should be same to compare. 81 lies in the powers of 3. That is 3 to the power 4. So when the bases are blur aa raha hai, is it for Gaurav or everybody else? Because so when the bases are same, we can just equate the powers. X plus 1 is 4. That means x is equal to 3. So that is option B. Clear? All of you got that? Let's go to the next one. This question is about rationalization.
So basically, you need to rationalize the denominator. That's what you have to do. Rational understand, irrational numbers, rational numbers understand that, right? The numbers when can be presented in form of p by q, where q is not equal to 1 and 0 as well. So that is a rational number. Root 5 is irrational because you don't know exactly what the value is. So I'll just multiply this whole thing by root 5 in the numerator as well as denominator. So upper I'll get 2 root 5, niche I'll get root 5 into root 5 is 5. All right. So I'll get 2 root 5 whole upon 5. That is option number C. All of you got that correct. Well done. Next question. This is a good question actually. A lot of people do this one wrong. Guys, there is a problem here. It should be in brackets. Then only you can find because the options are like that. Now it's fine. Tell me the answer. See, the difference here is when it's in bracket, the powers get multiplied and rest, will be x to the power 5. If the bracket was not there, then what would have been the answer? Let's discuss that as well. So here, what we do, we just look at the power. So 2 to the power 4 is what will be taken into consideration. So there will be x raised to power 2 to the power 4, which is 16. You get that? So in that case, answer would have been x to the power 13. We don't have that option. That is why I felt like it was a typing error. Anyways, you got it? Both the things clear? Aditya, Gaurav, Shreya, and everybody else who is watching. Let's go to the next one. This is square root of y to the power 6. So you can write y to the power 6 into 1 by 2. Square root is power 1 raised to power 1 by 2. This is 64. So y cube is 64. 4 cube is 64. We'll go for option B. This cube of 4 is 64. All right. It's given y is greater than 0. Okay. Next. 3 3 got cancelled out. We have 27x. Option D. Nothing more to do here. Next.
All right. Anything raised to power 0 is always 1. So 5 to the power 0 is 1 only. And 5 to the power minus 1, anything raised to power minus 1 is basically reciprocal of it. You remove the minus and take the reciprocal. ये 1 upon 5 की power 1 हो जाएगा. You understand that? Like a to the power minus m is equal to 1 upon a to the power m. That is what we'll be using here. So 1 plus 1 by 5 is 6 by 5. 6 by 5 is 1.2. There are 10 questions in each of the topics. After 10th question, I'll just give you a quick refresher of all the properties. All right. Next one. Root 75. 75 can be written as 25 into 3. If the square root, 25 ka square root is 5 and root 3 remains there. 5 root 3 divided by root 3. Root 3 got cancelled out. We only are left with 5. That's it. Surds and indices are over. Next topic is linear equation. Before that, I'll just give you a quick refresher of all the properties of surds and indices so that you never miss them out. All right. They are simple things, nothing much. When bases are same, powers are different, powers get added up. When bases are same, powers are different and they are getting divided, powers get subtracted. All right. When it is negative power, is basically equal to 1 upon a to the power m. When the power is itself fractional, it's basically mth root of a. When we have something like a to the power m by n, it's basically nth root of a to the power m. So all these things should be kept in mind while solving questions of surds and indices. All right, everyone. Indice is basically a plural of index. Index is the power. All right. Now let's go to the next topic, which happens to be linear equations. There are some single variable equations, some double variable equations. Okay, let's do that. The first one. I am giving you exactly 20 seconds for this. Even if the question is easy, 20 seconds. But in marathon, we don't go to the entire concepts. Every concept is done through the questions only. The exam is just 3 to 4 days away. As a date again, 6 तारीख को है, 6 days away. Three x minus 7 is 14. So 3x is equal to 14 plus 7. So x is 21 by 3. Answer is 7. All right. Let's go to the next one. बाद में डिफिकल्ट सवाल है बहुत बनाऊंगा अभी सिंपल दिस ऑल सेम 10 seconds में करना है 2x plus 4 is equal to 18 so 2x is equal to 18 minus 4 x is this upon 2 so x is again 7 here. Let's go to next one. Slope of the line. Well, here lies the concept. So whenever you have a line, see, I'll tell you, a line can be represented in many forms. One form is this: y is equal to mx plus c. Here, m is known as the slope, and c is known as the y-intercept. What is y-intercept? The point at which line cuts the y-axis. That is y-intercept. All right. So when will the line cut the y-axis? When x is 0. So if you put x as 0 here, this whole thing becomes y equal to c. That is how it goes. So when can we find the slope? When we write any line in this format. What is this format? That the coefficient of y should be 1. Okay, and in that case, whatever the coefficient of x is, that's going to be slope. So for this, if I write it like this, I'll get if I send minus 2y to the right hand side, 4x minus 10 is equal to 2y. All right, but to have the slope, we need intercept of coefficient of y to be equal to 1. Let's divide everything by 2.
So I get 2x minus 5 is equal to y. So this is in the same format now as if I compare, I get 2 as the slope. Is that clear, everyone? There is a very good concept. Is that clear? And someone asks what's the y-intercept? Your answer will be minus 5. Clear? The same question, if I ask what's the y-intercept, will be minus 5y, because just put x equal to 0 and get the y-intercept. If you want to find the x-intercept, just put y equal to 0. And that's all. So if you put y equal to 0, x will be 5 by 2. All right, that is x-intercept, and so on. So these things can be asked. Next question. Solve the system. Find the value of x and y. There are two ways, substitution and elimination. I'll give you 30 seconds to answer. If I just add these two, equation 1 and equation 2, y will get cancelled out because plus 5 minus 5 cancel out, and x plus x is 2x, that is 12, so x will be equal to 6. Once you got the value of x as 6, you can put it anywhere in the equations. By the way, we have only one possibility in the option 6, 4. So if you put 6 here or here, you'll get the same value. This is the method of elimination. We can also use substitution here, in which I can just put from the first equation x is equal to 10 minus 5 and put this value in second equation. So x minus y becomes 10 minus y equal 2, and that is how we can solve this as well, right? Right? So minus 2y becomes minus 8, which means y is equal to 4. And putting the value in the original equation, you get value of x as well. So elimination or substitution, both are correct. Let's go to the next one. Y-intercept. See, I just discussed this concept, and the question is here. I give you 30 seconds for this. How to find the y-intercept? Just put x equal to 0, and that's all. If you want to find x-intercept, just put y equal to 0. Okay? So if there is the system and there is a line like y and x-axis, so if this is the line, then this thing happens to be the y-intercept, all right? And this thing happens to be the x-intercept. To find y-intercept, as we see here, on this line, x is equal to 0. That is why put x equal to 0, you get y-intercept. That is the reason. That is the graphical reasoning for it. So let's put x equal to 0 here. Minus 10 to 0 becomes 0. So y is 5. We get 5 as the final answer. Is that clear, everyone? Got it? Got it? Next. Thirty seconds for this one as well. Nobody's answering. What happened? Who all are there? Mark your attendance once. A by 4 plus 3 equal to 7. That means A by 4 is equal to 7 minus 3. That is 4. So A will be equal to 4 into 4. That is 16. Option A. Nothing more. Let's go to the next one. Question number 17. 20 seconds for this.
So here, let's bring all the like terms together. So all the x's on the left hand side and constant term on the right hand side. So 3x is equal to 12. That means x is equal to 4. Option C. Clear? Next. $30 for this one as well. Sum of two consecutive integers is 33. What is consecutive? One after the other. Find the larger integer. All right. Two consecutive integers. So if one integer is x, other will be x plus 1. The sum is given as 33. Let's add them. So I get 2x is equal to 33 minus 1. That is 32. So x is equal to 16. Now x is 16. So x plus 1 will be equal to 17. We need the larger integer. Let's mark 17. This is an easy question. People can just in haste जल्दीबाजी में वो 16 मार्क कर सकते हैं अगर मतलब बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई है इसलिए मिस्टेक किया तो. All right, is that clear everyone? Let's go to the next one. तो अभी ये सारे सवाल इजी आ रहे हैं, धीरे धीरे और मुश्किल आएंगे. Solve for x. 30 seconds only. Okay, so here 0.5x will be equal to 6 plus 4, that is 10. So x will be 10 upon 0.5. 0.5 can be written as 1 by 2. So 2 goes up, 10 into 2 upon 1, we get 20 as the final answer. Here, cool. Next. Simple. X is 5. Let's put the value, get the answer. So y is equal to 2 into 5 minus 3. That is y will be 7. That's all. Nothing. Okay, so we are doing the easy questions first, then we'll move on to moderate level questions also. Quadratic equations. All right, that is part 3 of this of the PPT. Here we are. Find the roots. I'll also tell if there are any techniques to solve it quickly. All right. So there are multiple ways to solve this one. I gave you a shortcut technique once, if you remember that. What was that? What was that? So basically, when you have a quadratic equation, just multiply the constant term with the coefficient of first term. If I multiply 1 and 6, I'll get 6. I need to break the middle term in two parts, whose product is 6 only. So minus 5 can be broken down in two parts, that is minus 2 and minus 3, whose product is 6. Minus 2 minus, that is step 1. Step 2 will be reversing the sign. So minus becomes plus, plus becomes minus. Here is minus 2 minus 3. So let's reverse the sign. So minus becomes plus. I get plus 2 and plus 3. And then divide by the coefficient of
x square. That is 1 in this case, so it doesn't really matter. 2 and 3 is the correct answer. Clear? There's a shortcut technique without even doing the long form. Let's go to the next one. Discriminant. Who is there? Annie Usman. Usman Annie. Hi, Noor. So I assume somehow that you are preparing for MSCT, or maybe you're just interested in mathematics. So be here, enjoy the session. Let's see how many can you solve. Discriminant. So if we have a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, discriminant is given by b squared minus 4ac. All right. So a happens to be the coefficient of x squared, b is the coefficient of x, and c is the constant term. So 2, so I'll write discriminant as, now b here is 4. So 4 squared minus 4 into 2 into 2. 16 minus 16, that is 0 only. Perfect. Well, that also means if the discriminant is 0, the roots are equal, real and equal. All right. Let's go to the next one. A very simple question, but a lot of people are confused in this one. The simple, so whenever we have x squared is equal to 49, it's a quadratic expression, right? So we need two values. So it will be x is equal to plus 7 as well as minus 7, right? If the question was only x is root 49, in that case, we'll take only 7. So here plus minus 7 both will be taken into consideration. Let's go to next one. All right. So x square minus 9 equal to 0. That means x square is equal to 9, which means x is plus minus 3. Next one. Sum of the roots.
right? Sum of roots, it's always minus b by a, where b here in this case minus 7 and a is 1. So minus minus 7 is basically 7. We get 7 as the answer. Hi Harsh, welcome to the stream. Let's go to the next one. We are doing the, kind of the warm-up questions now, for now. Switching on to difficult questions as well. Product alpha beta is equal to c by a. So what is c? 12. What is a? 3. 12 by 3 is 4. Nothing else. Option C. That's all. Next. Vertex. You know what vertex is? Probably if you read the question and look at the options, you might be able to understand what vertex actually means. It's a term used for parabola. So parabola looks like this. It can be anywhere, right? So the minimum point here, that is the vertex. All right. So let's say it is x1, y1. We need the value for x1 and y1. Tell me the answer. All right. ये गलत तरीके से लिखा है. The bracket is missing. Y is x minus 2 whole square plus 3. That is the correct equation. Okay. Just rectify that and now tell me the answer. This is correct now. We need this point of the parabola. All right. Who's going to tell me the answer? Okay. So the moment I put x equal to 2, this thing becomes 0. Y becomes 3. So 2 comma 3 is the vertex. Is that clear, everyone? That is the vertex. All right. Let's go to next one. I don't know why nobody's answering. Okay. Factorize this expression. यहाँ brackets missing है. I'll just put the brackets here. Simple question. I don't think more than 10 seconds is required. So this is based on a simple algebraic identity which says a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. All these questions are made to warm you up. Okay. Are getting warmed up now. So x square minus 16 is x square minus 4 square. So I can have x minus 4 multiplied by x plus 4. And that's the answer, which is option C. Right? Let's go to the next one. Here we are. गौरव तुम बोल रहे कि सर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दो फिर क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ही बनाए गए हैं. राइट?
All right. Discriminant is negative. What does that mean? E square is less than 4ac. That means the roots are imaginary, not real. That is complex. Okay. I can see nobody's answering. Harsh, you there? Let's go to the next one. 20 seconds for this one as well. So if I solve it, either x minus 1 is 0 or x plus 5 is 0. This is 0, x will be equal to 1. This is 0, x will be equal to minus 5. 1 and minus 5 is the answer, option A. ठीक है, फटाफट 20 सेकंड से ये वाला क्विज कंप्लीट हो गया है. Now let's move to, so algebra 1 is complete. We are going to algebra 2 now, in which we'll be doing first 10 questions of polynomials. Okay, we'll do it very real quick. चलो बताओ, the timer starts here. 30 seconds for this. Now, do you know what is a degree? What actually is degree? The highest power. Okay, and degree is always, now I want to tell you something very important, because I have seen a lot of people getting confused in this, and not just people, not the students. I have seen a lot of teachers also doing it wrong. Sorry, all the teachers, but I have seen you doing it wrong. So it's like, if someone asks you what is the degree of x to power minus 2, tell me. Let's see who tells me that. Degree of x to power minus 2. Harsh, Gaurav, and everybody else is watching. Or 1 by x square, or 1 by x, all that stuff. Anybody? See, this won't be having any degree. You know why? Because that goes against the definition of polynomials. What's a polynomial? It's px is equal to a0, x to power 0 plus a1, x to power 1 plus a2, x to the power 2 plus a3, x to the power 3, and so on till an, x to the power n. So as you see that the degrees can be positive only, right? Right? It can never be negative, it can never be fractional. So here in this case, हर्ष मैं कुछ और पूछ रहा था तो पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल हम हमेशा डेफिनेशन ही ये है पॉलिनोमियल की. ऑलराइट, px is this. So as you see, degrees, these are degrees. So highest power of x is the degree. Here, if you expand this, no need to expand it. If you're expanding, you're wasting time. If you expand this, is one thing for sure, that somehow this x square का क्यूब तो आएगा ही आएगा, तो x की पावर 6 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे x पावर 1 में है, तो बहुत सारे इसमें टर्म्स आएंगे, बट अल्टीमेटली जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो x की पावर 7 पे ही आएगा. सो आंसर इज 7. इज दैट क्लियर एवरीवन? Polynomial definition and degree. Chalo, let's go to the next one. Next one. I don't think this is even, we should discuss this question. It's 2,3. Let's move ahead. Which of the following is a factor of this?
All right. Factor of x cube minus 1. See, I'll tell you something here. One thing is important. If we have something like this, let's say x to the power n plus y to the power n, then if n is odd, listen to me carefully. If n is odd, what just happened? Yeah. So if n is odd, then this thing will be divisible by x plus y. Just note this down in case you don't know. So x cube minus 1 is basically x cube minus 1 cube. Degrees, the powers are odd. So x minus 1 से divide ये होगा. We'll go for option B. Is that clear? Noted. I'll wait for 10 seconds and tell me no. Done. Cool. Let's go to the next one. Remainder when is divided by x minus 1. This question is based on remainder theorem. All right. It's basically whenever you have a function, an expression fx, when it's divided by x minus a mod x minus, it's not modulus, it's modulo. So this will give you the remainder, which is fa. So basically, if you see here, this is divided by x minus 1. If you compare, you can see that I just need to put a in place of x. That means here 1 in place of x. So 1 squared plus 3 into 1 plus 2, 1 plus 3 plus 2 is 6. That is the final answer. Is that clear, everyone? This is the simplest application of remainder theorem. Let's go to the next one. X square minus sum of roots times x plus product of roots is equal to 0. You know that sum is 7, product is 10. So x square minus 7x plus 10 equal to 0. That's the answer. No need to even guess it. Let's go to the next one. Because Vieta's formula. Check the discriminant and tell me the answer. All right. Nature of roots. We need to find the discriminant, which is b square minus 4ac. So b here is 1, a here is 1, c here is 1. I'll get 1 square minus 4 into 1 into 1. Right? I'm getting 1 minus 4, that is minus 3. So discriminant is negative, the roots are imaginary, non-real, complex. Okay? Simple. Let's go to the next one.
All right. Factor. So what can be a factor? Can I use remainder theorem here as well? There's a nice question in which we'll be using remainder theorem, the application of remainder theorem. So when can this be a factor? This can be a factor if the remainder obtained by dividing this is zero. So if you divide it normally, you'll end up wasting a lot of time. We can use remainder theorem here. Let's put 2 in place of x. 2 cube minus 4 into 2 square plus 2k minus 8. Okay, remainder should be 0. This guy should be 0. All right. Is this how you solve? Harsh and everybody else? So this is 2 cube 8 minus 16 minus 8 plus 2k is equal to 0. As simple as that. Let's solve it. 2k, this is 8 minus 8, 0. So plus 16. So k is equal to 8. We get the answer as option A. K is equal to 8. Is that clear, everyone? Use remainder theorem? Well done. Let's go to the next one. All right. Leading coefficient will be obtained when these two are multiplied. We'll be getting other things also. Leading मतलब क्या होता है पहला वाला कौन सा आएगा जो हाईएस्ट डिग्री होगी जिसकी तो हाईएस्ट डिग्री 3 होगी 3 into 2 6 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे we'll get C as the final answer. Cool. Next one. Degree of the zero polynomial is defined by what? Let's see who answers this one. Who knows that? What is a zero polynomial? It looks like this. All the coefficients are zeros, like 0 to 0 x to power n, 0 x to power n minus 1, and so on. So all the coefficients are zeros. In this case, the degree is undefined. All right. The new thing. Harsh, got it? वह हर्ष जीरो कब होगा वो तब होगा जब वो कांस्टेंट टर्म हो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो जाएगी every coefficient is zero in itself all right basically px is equal to zero that is zero polynomial the degree is undefined this is a nice question important question now we come to linear quadratic inequalities पहले सिंपल सिंपल सवाल है फटाफट कर लो
This one is pretty simple. So 3x will be greater than 8 plus 7, 15. So x is greater than 5, nothing else. Simple question. 10-10 सेकंड में करेंगे. कुछ सवाल बहुत इजी है, 10-10 seconds each. Well, so what happens here, whenever you multiply on both sides of inequality with -1, what happens? The sign changes, which doesn't have an equation normally. So 2x will be greater than -10, which means x is greater than -5. I'll get option B as the answer. Clear? हर्ष, पहले तुमने गलती से गलत कर दिया था, बट अब सही है. तो सही किया है, पहले गलत कर दिया था. Is that clear, everyone? Let's go to next one. वैसे पूरा का पूरा प्रिपरेशन एक एक रिवीजन तो हो ही जाएगा अलजेब्रा की सारी थ्योरम्स का. फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेंगे. x square minus 4 is less than 0. That means x square is less than 4. अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो वहीं बीच में लाई करना चाहिए. So we'll get, whenever we have something like this, normally if it is equal to, you get x equal to plus minus 2. But in this case, you will get x lies between two values, that is -2 and +2. Option C. That's it. Next. For these kind of questions, you need to do one thing. जो बीच में है यहाँ हमें x चाहिए किस तरीके से. पहले करूंगा +1 कर दूंगा. I'll add 1 to all the sides. So 5 plus 1 becomes 6. 2x minus 1 becomes 2x only. This is 11 plus 1 is 12. Now divide by 2 everywhere. So you'll get 3 less than equal to x less than 6. See, this is the best way to approach this question. 3 is less than equal to x is less than 6. Clear? Harsh, ऐसे ही किया? For this, 10 seconds again. 1 by x is greater than 2. That means x should be greater than 1 by 2. Nothing has to be done here. Is it right? Is it clear? Next. Mod of x minus 3 is less than equal to 5. क्या करोगे इसके लिए? The moment you remove mod, x minus 3 है ना? The moment you remove mod, this, this will lie between two ranges. Which one they will be? -5 to +5. Now, same thing. The same thing. ठीक है?
3 ऐड कर दो, +3 everywhere. So I'll get -2 is less than equal to x is less than equal to 8. So -2 to 8 in closed interval because both are, see, this is important. ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में -2 और 8 इंक्लूड नहीं होंगे, बट यहाँ हमारे हो रहे हैं, इक्वल टू है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑल राइट, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. A is less than B and C is less than 0. Then what is going to be correct here? Okay, Harsh says AC is less than BC. Okay, Harsh, let me show you one example. Let's say A is equal to 1, B is equal to 2, and C is equal to -1. In that case, let's say what happens. Let's see what happens for this. So AC is -1, while BC will be -2. Isn't it? Is this less? -1 is greater actually. -1 is greater. So this can't be true. Do you understand? पहला गलत हो गया, दूसरा सही होगा क्या? दूसरे के लिए ये तो सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन. But what if I take something like this? Let A equal to, let's say, -1, B is 2, and C is -1. Then let's see what happens. A into C becomes 1, while B into C becomes -2. ये सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है ना? अगर मैं दोनों ही नेगेटिव ले लूं तो क्या होगा? Like A is equal to -1. Let's say A is -2, B is equal to -1, keeping this correct, and C is equal to -1. In that case, A into C, 2, B into C, 1. तब भी सही हो रहा है. तो बी सही है. इज बी करेक्ट ऑलवेज? यस और नो? I took both the negatives. I took one negative, one positive. What if I take both the positives? तो ये है. Will this be correct? Yes, this will be correct. Why this will be correct? Because the moment you multiply an inequality with a negative sign, the sign of inequality changes. So C is negative, so the sign changes, right? It's like A was less than B and C is a negative term. If you multiply that, okay, if you multiply that with a negative number, so the inequality sign of inequality changes. So B is correct. A भी दोनों सेम थोड़ी ना है, एक में लेस एक में ग्रेटर है. Okay, Harsh, got it. This is a very good question. Seems very simple, but people can, mark it wrong. Let's go to next one. Oh, Harsh, again phone पे देख रहे हो. Which equation is always greater than or equal to 0 for all real x?
सी तो नहीं होगा हर्ष. व्हाट इफ आई टेक x इक्वल टू सी होगा. ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव. या real x. Because you put here, what positive yoga. Perfect. Well done. Let's go to the next one. Yeah, she is definitely will definitely happen. Exactly, Harsh. X minus 1 multiplied by x minus 5 is greater than 0. For these kind of questions, I'll tell you technique. Let this be number line. This is 1, this is 5. 1 and 5 are the critical points. So what's going to happen? See, listen very carefully. If I take anything, these are the values of x. If I take anything greater than 5, this will be positive, this will be positive. So greater than 5 will be positive always. All right. Now, there is one thing. Whenever the powers are odd, here the powers are odd. Power is 1, 3, whatever is, it's there. When the power is odd, the signs here, they alternate. So if it plus here, this becomes minus, this becomes plus. As simple as that. Do you understand? Do you understand that? तो तो ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे है, 1 से नीचे और 5 से ऊपर. सो आंसर इज ऑप्शन बी. इज दैट क्लियर? हर्ष, you got it? हाँ, the answer is B. So this is people call it baby curve method. It's such a nice technique, but at the very same time, I'll just, if I change the question, see, if I have a question like this, x minus 1 whole square into x minus 5 is greater than 0. In that case, what's going to happen? This 1, this is 1, this is 5. So anything, if I take more than 5, it'll be positive. Here the power is odd, becomes negative. The power becomes even. If the power becomes even, the sign would not change. So minus remains minus only. So the answer is, it is positive only when x is greater than 5. So I would have marked D. Is that clear? This is very important rule. Okay, let's go to the next one. Absolute value modulus. Mod, if you remove the mod, you get plus 5 and minus 5. So x will be equal to plus 5, plus 10 is 15, minus 5 plus 10 is minus 5. 15 and minus 5. माइनस 5 क्यों, माइनस 5 क्यों लिख रहा हूं मैं, +5, 15 and 5. So option C. All right. Next one. Here we are with the next question.
All right. So mod 2x plus 4 is equal to 0. So if you remove the modulus, what's going to happen? Not able to see the question? There was a lag. Now I think it's fine. Is it fine now? So as it is modulus, and now it is equal to 0. So nothing's going to change now, right? That happens if we have some other number. Plus 0, minus 0 is the same thing. So nothing's going to change. So x is minus 2 and that's all. In this case, nothing's going to change. Cool? Clear? Let's go to the next one. In this case, things will change. Tell me. This is a nice question, a tricky one. It's not even mathematical, it's logical question, right? Very logical. Hmm. See, it says modulus. Now, modulus is always greater than or equal to 0. It can never be negative, isn't it? That's an important part of modulus. Yeah. So the question talks about the question talks about this thing being minus 2. It's not even possible. It's not possible, right? So what does that mean? There'll be no real solution. All right. There'll be no real solution over here. Is that clear? Impossible equality. ऊपर मैंने hint भी दे रखा है. Let's go to next one. Good evening, Kavya. For which x fx is undefined. So basically x can't be 0, right? See. Next. This is minus 7 and 3 on the number line is what? सही है. Hasn't the question changed? Yeah, I'm seeing the comment only. I asked you. Harsh, I think there's a lag between your and my comment. Distance between minus 7 and 3 on the number line is what? ठीक तो है मेरे ख्याल से. हर्ष ठीक है कि नहीं है? Kavya, everybody else who is watching, do you see the same question which I'm mentioning right now? Question 25, absolute distance. Minus 7 and 3. So this is minus 7
Here we have 3, बीच में कहीं 0 होगा, right? So what's the difference here? It's 10 units. So -7 -3 का mod कर दो, या 3 -7 कर दो, ऑप्शन है. Harsh, please tell me if that's correct now, if it's visible now. Next question. Here we have two mods. Mod of x minus 2. If I remove the first mod, I'll get plus minus 3, right? Which means mod x is equal to plus 3 plus 2 is 5, or minus 3 plus 2 is minus 1. If I remove the mod again, what do I get? Plus minus 5. ये तो possible ही नहीं है. Mod x can never be minus 1. Can it be? No. So we'll go for only plus 5 or minus 5, option B. Now, a lot of people will get confused and mark this one, and they will confidently do it wrong. Okay. Is that clear, everyone? This is a nice question which people can go wrong. समझ में आया कैसे हुआ ये मैंने क्यों रिजेक्ट किया? I rejected because a modulus value can never be negative. जिन लोगों ने रिजल्ट इसे रिजेक्ट नहीं किया, उनका बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत हो जाएगा. Obviously don't want that. Next one. All right, this one, which will be true. You take whatever value a negative, positive, जो भी आएगा multiply होके उसका एक sign होगा, वो sign cancel out हो जाएगा because of modulus. Same thing will happen in B also. So B will be the most plausible choice. यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे तो एडिशन है तो वैसे भी नहीं होगा. यहाँ जो कुछ भी है नेगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल. सो बी इज द ओनली करेक्ट पॉसिबिलिटी. नेक्स्ट वन. एहान, व्हाट हैपेंड? स्क्रॉल करते करते इंडिया पहुंच गया, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट?
Okay, geometrically, mod of x minus a is less than r. It represents what? So if I remove the modulus, x minus a will less than r but greater than minus r. Now I need only x in between. So I'll just add a to all the sides. So I'll get minus r plus a is less than x is equal to r plus a. All right. So as you see, this and this interval, this is minus r plus a, or you can say a minus r. This is a plus r. In between these, this interval in the simple bracket, not the square bracket. Because why? Because we use simple bracket whenever we have less than sign or greater than sign. Whenever we have less than equal to, use the square brackets. So B is correct one here. So X is lying between A minus R and between A plus R. All right, let's go to the next one. The final question of this, not the marathon, but this one. From Pakistan. Hey, hi. Welcome to your neighbors. If you love mathematics, start doing it. Which of the following is equivalent to root of x square? I don't think you need much uh, perspective on this. So tell me something. Now this question is kind of seems very easy, but it can actually be difficult. I'll tell you what. If I equate this to y, so I'm taking the square root of x square, right? Right. Now at the very same time, whenever you take the square root, it is possible that you get plus x and minus x. But the thing is, when we have something like this, we don't choose the minus x because here the degree of y is 1. We need only, and moreover, if at all we have two possibilities, we'll just choose the possibility that is natural number. We'll choose the positive sign. And why is it so? Why is it so? Because here, if you equate it to some variable, the degree is 1, so we can get only one root, not more than one. That is why we'll eliminate minus x and choose only x. This is a very important question. Is that clear? But at the very same time, if the question is like this, why? For example, I'll give you an example. Let's say someone asks x is equal to root 4 and someone asks x square is equal to 4. Now these two things are totally different. Here you will get x as 2, while here you will get x as plus 2 or minus 2. All right. So then you are not bit late, you are very late. In fact, 1 hour 30 minutes late. And you know what? How many questions have we done? You won't even believe that. By the way, questions were easy. Some were moderate. Majorly they were easy. So it was a kind of a refresher of entire algebra. We'll be going to difficult questions as well. We have already done 40 questions in 1.5 hours. Let's go to Algebra 3 now. The third slide, which I have, AP, GP, all that stuff we'll be doing now. So let's do it. Here we are. Timer starts. समझ नहीं आया यहाँ कौन सा पिछला वाला फिर से बता देता हूँ मैं देखो देखो होता क्या है whenever someone asks you okay x is equal to square root of 4. Now you know what square root of 4, you know 2 square is equal to 4, so square root of 4 is 2. Now the problem is 2 square is also 4 and minus 2 square is also 4, isn't it? So people might be getting confused that if someone asks you square root of 4, you are somehow, you want to write plus 2 and minus 2. But this will be wrong. Why? At the very same time, if someone asks you what is x square equal to 4, in this case, x will be plus 2 minus 2. This will be right. Now, what I said here, why this will be wrong? I'll choose only 2. Why? Because here,
x का जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है. जितना भी पावर होता है उतने ही हमें सोल्यूशन भी मिलेंगे. All right. So because power of x is 1, we get only one solution. So from plus 2 and minus 2, I'll choose plus 2, not minus 2. Why? Because the automatically the choice is always the natural number, the positive number, not the negative one. While here, the degree is 2, right? The power is 2. So you will get two solutions. So one solution is plus 2, other is minus 2. This is the main thing in which a lot of people get confused. Now it's clear, everyone? So coming back to the question which we do, okay, I'll just wait for 10 seconds more. Ehan, in case you want to ask. आगे समझ में? Very good. Next one. You have a minute to solve this. All right. Good exam tomorrow. All the best, Rehan. Ehan. Okay, so here there are multiple ways to solve this. One is nth term is given by a plus n minus 1 times d, where a is the first term. All right, n is the number of term at which we are calculating. D is the common difference. So this happens for an arithmetic progression in which all the differences are common. Like the gap is 3 always, right? So now, if I want to find 10th term, the first term here is 2. 10 minus 1 times 3 is what we get. So 2 plus 9 into 3. All right. So you'll get 2 plus 27. That is 29 will be the correct answer. Okay. Ihan, not 14. Bro, what you did, you know what you are doing? You thought that I'm asking the next term. Not really. Look at the correct question. You need to find 10th term. आपने क्या कर दिया? 2 के बाद 5, 8, 11, 14 को बोल दिया. No, but the question was 10th term. Okay, so this is the one of the ways to solve it, but also at the very same time, I think you guys might be wanting to know a shortcut technique, which I made once. I discussed the technique in the last class also, but I just discussed it once again. So here, the elements are this, right? So what do you need to do? Listen very carefully. The gap is 3. Just write 3n. So whatever the gap is, just multiply that gap by n and write 3n. Now, tell me, if I put n is equal to 1, I would get 3n is 3. If I put n equal to 2, I'll get 3n is 6, and so on. Okay, so 3n should not be the correct sequence, because here the sequence is 2, 5, 8, and 11 and all. While I am putting 1, 2, 3, I'm getting 3, 6, 9. Now, the thing is, if I'll just erase it. Now, see, so gap was 3. I wrote 3n. Now I see one thing. The moment I put n equal to 1, I'm getting 3n as 3. I put n equal to 2, I'm getting 3n as 6. But the reality is that this number 2 is 1 less than 3. This number 5 is 1 less than 6. So essentially what is happening, whatever I am getting by this, the real series is 1 less than that. So let's put -1, and that's the answer. That's it. So now you have found the general term.
दिस इज अ शॉर्टकट अप्रोच। फिर से बताऊं मैं, जो भी गैप आएगा, जो भी वैल्यू जो गैप होगी, उसको लिखो और आगे n लगा दो। उसके बाद 1 2 3 पुट कर देखो, 1 से ही मालूम पड़े तो 1 पुट करो। जैसे पुट करोगे तुम्हें मिलेगा 3, होना चाहिए 2। मतलब जो एक्चुअल सीक्वेंस है वो हमारे इससे एक कम है, तो एक माइनस कर दो, दैट्स ऑल। अगर एक ज्यादा होता तो एक प्लस कर देते। सो दैट्स इट, दैट इज इट, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So Tn is, nth term is 3n minus 1. I need the 10th term. T10 will be 3 into 10 minus 1. I'm getting 29 directly. Isn't this cool? Sadanand, Ehan, uh, Aditya, and everybody else who is watching this, did you understand this? Isn't this really a great technique to look at? Because this is how you'll be able to solve any question like this in within 10 seconds. Otherwise, you would have wasted a complete minute. Oh, Sadanand, is that so? Might be. Here, everyone, if you liked it, just throw some likes, love, reactions, and all. Chalo, let's go to the next one. Here we are. हर्ष कोई आंसर नहीं कर रहा। हर्ष का नेटवर्क खराब हो गया है। नो वरीज। Only 1 minute for this. This is a simple question, right? I told you earlier also. Sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. That's all. That's all. Let's put 10 there and get the answer. 10 into 11 by 2, 2 5s are, so 5s are, so answer is 55. ये तो याद ही होगा वैसे. First n natural numbers sum 55 होता है. Let's go to the next one. Some simple questions now, and we'll be going on to the difficult questions as well. 30 seconds for this. Common ratio. So every term is 2 times the previous one. Common ratio is 2. खत्म हो गई बात, कुछ करना ही नहीं इसका, आगे बढ़ते हैं. Sum of infinite GP. Sum of infinite GP is always given by a upon 1 minus r, where a is the first term, all right, r is the common ratio. By the way, you can get the sum of infinite terms only if r is less than 1. This is something which is very important. When I'll be teaching you in detail algebra, I'll tell you why this happens. But for now, you can just remember this formula and get going. So first term is 1. Common ratio, as you see, it's 1 by 3, because everything is 1 by 3, the previous one. So 1 minus 1 by 3 is what we get. So 1 upon 2 by 3 is 3 by 2. 3 by 2 is 1.5. That is the answer, right? Next. All right. Sum of n terms is given by n by 2 times first term plus last term. If the first and last terms are known, if the last term is not known, you'll use the formula n by 2 times 2a plus n minus 1 times d. So here we need to find S20, which means 20 by 2. The first term is given as 5.
2 into 5 plus 21 is 19 and D is 3 multiplied by 3. That's all. So 10 times 10 plus 57. 670 will be the final answer. Cool. But you got that? Well done. Next. Solve it. So in things like geometric progression, 2x 18, something multiplied by this gives x, something multiplied by this gives 18. So basically what is happening, they are in ratios. Ratio. So 2 by x should be equal to x by 18. That's all. Also, always remember, in geometric progression, the middle term is always the geometric mean of the first and last. So we can also write x square is 2 into 18, which happens here as well, right? So x will be equal to square root of this, which is 6. So x is 6. Clear? Next. Only 10 seconds for this question. Simple. A plus n minus 1 times d. We did that, discussed that already. Next. n terms of AP, first term A, last term L. ये सब फॉर्मूले प्रैक्टिस रिवीजन फटाफट हो रहा है. n by 2 times A plus L. No need to pay much heed to it. Arithmetic mean is basically simple average. All right. So 4 plus 10 upon 2. Average is 7. फटाफट ये खत्म करते हैं. आगे. I'll give you 45 seconds for this one. Done. So it says Sn is given by 2n square plus 3n, right? So I'll make a table, n and Sn. So if n is 1, I'm getting 2 plus 3, 5. If n is 2, यहाँ पे गलती होने की बहुत chances है. 2 square 4 into 2, 8, right? Plus 3 into 2 is 6, 8 plus 6 is 14. Okay. If I put n as 3, 3 square is 9 into 2 is 18, plus 9 is 27. If I put n as 4, I'll do till 4. 4 square is 16 into 2, 32. 32 plus 4 into 12. 32 plus 12 is 44. Now, these are the sum of n terms, not the terms actually. To find the common difference between the terms. So let me find the terms also. If sum of first term is 5, the first term will be 5 only. If sum of two terms is 14 and first term was 5, so sum of second term will be this 9 more must be 9. That is the reason why I'm getting sum of two terms will be 14. Is that clear? This is 13 more. This must be 13.
Is that clear, everyone? There's 17 more, must be 17. So as you see, the gap here is 4. So the answer is 4. Is that clear, everyone? All of you, is that clear, everyone? Got it? But do you want to know a technique from Brahma Ganit? Do you want that? I'll teach you that if you want that. बताऊं टेक्निक? कैलकुलस एक बनाया था मैंने, कैलकुलस के थ्रू ही है ये, बट ऐसे भी बता देता हूं मैं. देखो एक बात समझना. If whenever we have the expression of sum, the moment I differentiate it, in case you know differentiation, so d of Sn upon dn, if I take it with respect to n, हालांकि कैलकुलस कोर्स में नहीं है एमबीए के, बट एक बार एमबीए एंट्रेंस के बाद में फाइनेंस में तो होगा ही, if you take finance. So you know what is going to happen? You will get 4n plus 3. This is basically slope, right? 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 And so this would be equal to what? This will give you the slope of the terms. And if you again differentiate it second time, okay, I'll just write it like this, simplified. Sn dash, Sn dash dash, second differential. You get 4. This 4 will be the common difference. This is always going to happen. Do you understand why that happens? In calculus, if you differentiate, you get the slope. So first order slope is what you get, that is for the straight line. The second order slope will be the constant term, which is the gap between the lines, gap between the points of the lines. And that is nothing but in an AP, that's the common difference. Isn't this cool? अब तुम बोलो कि सर हमने तो कैलकुलस पढ़ी ही नहीं है, तो क्या करेंगे? तो मैं तुम्हें और छोटा टेक्निक बताऊंगा, और भी छोटा टेक्निक बिना कैलकुलस के. बताया करो. जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट, उस डिग्री को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड दैट विल बी योर आंसर. दैट विल ऑलवेज बी योर आंसर. हमेशा ऐसा होगा. जब कैट की क्लास में लूंगा, अलजेब्रा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आई विल टेल अबाउट दैट टेक्निक, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स फाइन. हाँ, नाइस. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. Yeah, Sadanand. Brahmagana is a study of all these hidden between the expressions kind of knowledge base. This is simple. So Tn in GP is always a r to the power n minus 1. A is the first term, r is 3 here, n is 5, so power 4. So 2 into 81, you'll get 162. Option C. Clear? Next. Geometric mean, 10 seconds only.
Simple. 4 into 16 का square root, that is root of 64, you get 8 as the final answer. Next. Now coming to functions and logarithms. Do it, the first one. Domain. You know what's domain? The values of x, and range is the value of fx. Hi, Aditi. You know how many questions have we done? You won't believe that. 30 plus 30, 60, 70 have been done. 70 questions are already. By the way, it was all easy and moderate, but 70 have been done. So x का value is 0 नहीं हो सकता because 1 by 0 is not defined. So we'll go for option B, right? Let's go to the next one. Inverse of the function. You know how to find inverse? You need to write the function in terms of x. So I'll get y minus 2 upon 3 is equal to x. All right. And now replace y with x and x with f inverse y. So x minus 2. So this will be x minus 2 upon 3 is the value of f inverse x. Clear? That's all. Basically, इसको x को y के टर्म में लिखना है और वो y को x के फॉर्म में लिख देना है. मतलब x को y के फॉर्म में लिखना है और y को x से रिप्लेस कर देना है. So x minus 2 upon 3 is the correct answer. Clear? Let's go to the next one. So basically, this is if I write this to be equal to x, by definition, 2 to the power x becomes 64. Which power of 2 is 64? Sixth power. So I'll go for C. टेन की पावर x is 1000. सर्च इंडाइस हमने किया है 10 की पावर 3 होगी. तो कंपेयरिंग द पावर्स x will be equal to 3. ये सिंपल सिंपल सवाल हैं, इजी वाले. ये बेसिकली ये एल्जेब्रा मैराथन इसलिए बनाई गई है कि पूरी एल्जेब्रा रिवाइज हो जाए बिना एल्जेब्रा की थ्योरी बताए. तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्सेप्ट रिवीजन वाले क्वेश्चंस हैं, ये वाले कुछ, और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, और फिर डिफिकल्ट आने वाले हैं. ओके, ये कर लो. This is a moderate level question which can actually be asked in MSCT. The moment clock takes hits zero, I'll start explaining that. It says fx equal to x, but that means whatever goes inside x, fx, it becomes a square. And in case of gx, it's a kind of, so basically, you know what? Fx is a processing box. If x goes inside, x square comes outside. And gx is a processing box, which is like if x goes inside, x plus 1 comes outside. And this is f of g2. So basically, if this is f of gx, then I'll just replace. So now gx will be going inside and gx ka square will be coming outside, right? And what is gx? X goes inside, x plus 1
Hi guys. So sir will be joining in a while. तब तक के लिए I'll be taking the session. So this is your question. यही question पे थे, right? Okay, then you guys can solve. बहुत easy questions हैं ये, तो एक एक मिनट दूंगा, not more than that. I'm audible and you guys can see me, right? Screen दिख रही है, मैं दिख रहा हूँ, audible हूँ मैं, everything is good. So I will join in a while. Till that, we'll solve the questions. Okay. Let me check if you guys can see me. Yeah, I'm audible. Okay, let's solve this question. So यहाँ पे एक f of x फंक्शन दिया है, एक g of x फंक्शन दिया है, and then we have to find something of f of g of 2. ठीक है, तो f of g of 2, तो अगर हमारे पास ये चीज सिर्फ g of 2 निकालना होता, थिकनेस थोड़ा बड़ा, हाँ, अगर सिर्फ हमें g of 2 निकालना होता तो वो क्या होता, g of 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते, दिस बिकम्स x प्लस वन, तो x की वैल्यू ही 2 करी, 2 सब्स्टिट्यूट की थी, तो दिस बिकम्स 2 प्लस वन विच इज इक्वल टू 3, तो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स f ऑफ 3, क्योंकि g ऑफ 2 क्या है, g ऑफ 2 अल्टीमेटली 3 ही है, तो उसको मैंने 3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये 3 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, so this becomes 9, so answer is D. Let's go to the next question. Try this one. Good evening, Aditi. Okay, so let's try this question. This is log 10 plus log 100. तो इसके जो बेसिस हमें लेने होते हैं, दिस बिकम्स e एंड दिस बिकम्स 10 बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे log दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस 10 होगा। सो अगर log विथ बेस a एंड a, दिस इसकी वैल्यू 1 होती है, ये चीज मुझे पता है, या फिर log a स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2 log a। सो ये पूरी वैल्यू 1 थी, तो दिस बिकम्स 2। सो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, इस फॉर्म का है। इस पूरे को लिखूंगा मैं जब, तो 100 क्या होगा, 100 इज 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर को मैं इसको अगर नॉर्मली लिखने जाऊंगा फिर, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, तो फिर 2 यहां से बाहर लाऊंगा इस फॉर्म से, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स लॉग 10, 9 p.m. और हमें ये पता है ये 1 होता है, सो दिस बिकम्स 2, सो दिस इज 2, सो 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, आंसर इज सी। ये सारे क्वेश्चन मेंटली भी कर सकते हो, लेट मी थोड़ा थिकनेस कम कर लेता हूँ ना। हाँ, ओके, लेट्स मूव अहेड, ट्राई दिस वन। ओके, जस्ट अ मिनट, मेरा चैट बॉक्स क्लोज हो गया। ओके, ओके, यू गाइस हैव सॉल्व, तो चलो सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1 विथ बेस a फॉर एनी a ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे
इसकी वैल्यू निकालनी है फॉर एनी ए ग्रेटर देन जीरो, राइट? फॉर एनी वैलिड बेस ए ग्रेटर देन जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू वन। चलो ऐसे नहीं समझते हैं इसको, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं कि लॉग ए वन अगर जीरो होता तो यहाँ पे क्या होता? ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन, यही चीज आती, राइट? सो टू व्हाट पावर मस्ट मस्ट ए बी रेज्ड टू गेट वन, यही चीज यहाँ पूछा है। सो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। अगर मैं बेसिक नॉर्मल वे में इसको सॉल्व करने जाऊं तो इसका आंसर वन आ जाएगा। या तो इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर इसको ऐसे समझो, ए इज ग्रेटर देन जीरो, सो ए नॉट इक्वल टू वन के लिए करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सॉल्विंग, हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग एंड हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, राइट? डू दिस वन। यहाँ पे दो केसेस होते हैं, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन। क्या होता है मैं बताता हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस, पूरे एकदम फाउंडेशन लेवल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ये सारी चीजें, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा। ओके, सो व्हाट, देयर आर टू काइंड ऑफ फंक्शंस, वन इज इवन फंक्शन एंड वन इज ऑड फंक्शन, करेक्ट सदानंद? सो व्हाट इज एन इवन फंक्शन? इवन फंक्शन इज, अगर तुम्हारे पास कुछ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लेट्स से इफ यू आर गिवन समथिंग एफ ऑफ एक्स, सो इवन फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो एफ ऑफ एक्स, बट इन ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? ठीक है, सो दिस मीन्स व्हाट, द ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ये ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, सो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो इवन में इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, एंड यहाँ पे दूसरा चीज होता है। तो वाई ग्राफ पे हम डीप डाइव नहीं करेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग महाराष्ट्र सीटी वाला एग्जाम, वहां पे बेसिक हमें बस यही पता होना चाहिए, तो उस पे अंदर नहीं घुसते हैं। उसके अंदर जाएंगे तो इट विल बी एन ओशन जहाँ पे हमें तैरना होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, चलो तो उस पे नहीं जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम हर चीज को एफ ऑफ एक्स इसको कंसिडर करेंगे और इसको माइनस करके चेक करेंगे कि वो इवन बन रहा है या ऑड बन रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो दिस बिकम्स माइनस एक्स, यहाँ पे हम करते हैं तो माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर हम यहाँ पे करते हैं सो दिस बिकम्स माइनस एक्स क्यूब, सो दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे हम करते हैं तो माइनस एक्स टू द पावर फाइव, सो दिस बिकम्स माइनस एक्स टू द पावर फाइव। यहाँ पे हम माइनस एक्स करते हैं तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ वन बाई एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इवन एंड ऑड फंक्शंस वाले क्वेश्चन। तुम्हें नॉर्मली उसको नेगेटिव करना है एंड उनको सॉल्व करना है। ट्राई दिस वन। Sadanand got the answer. What about others? ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। तो इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, लॉगरिथम की रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लॉग्स वीकनेस, डोंट नो व्हाई सर।
आई डेंट गेट यू सचिन, हाउ कैन आई इम्प्रूव? ओके, तुम बेसिकली ये पूछ रहे हो कि लॉगरिदम में तुम्हें दिक्कत हो रही है, उसमें तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट? तो लॉग्स की जो बेसिक चीजें होती है ना, उसको समझो। उसके बाद उसके अबाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो अपने आप वो चीजें क्लियर होने लगेंगी एकदम फाउंडेशन लेवल से। जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो मैं भी कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद तुम उनके क्वेश्चंस करोगे तो इजीली क्लिक होने लगेंगी चीजें कि कैसे होती हैं। सो लेट्स से यू आर गिवन विथ लॉग बेस ए एंड बी, ठीक है? ये एक नॉर्मल लॉग का एक, लेट्स से कोई वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास लॉगरिदम वाली, ठीक है? अब इसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी, लेट्स से इफ यू आर गिवन विथ लॉग ए बी टू द पावर एन, तो ये बन जाएगा एन बाहर आ जाएगा और अंदर लॉग ए विथ बेस बी, ये आ जाएगा ऐसे। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा गिवन है लॉग ए टू द पावर एन एंड बी, तो ये बन जाएगा 1/n लॉग ए बी। तो जब भी बेस में पावर होगा तो वो बाहर आएगा, सो दैट कम्स इन दिस फॉर्म। और जब भी यहाँ नॉर्मल यहाँ पे वैल्यू है, इससे इस पे कोई पावर है तो दिस कम्स आउट इन दिस फॉर्म, ठीक है? ये दो चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी। तो इसमें क्या होगा? इसमें लॉग ए बी सी, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा बी और सी, ठीक है? नेक्स्ट इज लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी। इसमें क्या होगा? लॉग ए बी डिवाइडेड बाय सी। यहां पे ये माइनस है तो ये डिवीजन में आ गया, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस एंड दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट दीज आर सम ऑफ द बेसिक वंस जो तुम्हें पता होनी चाहिए लॉगरिथम के क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज बोल लो, आइडेंटिटी बोल लो, वॉट एवर यू कॉल इट, बट ये तुम्हें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है? लॉग ए टू द पावर बी, ए टू द पावर बी। तो इसमें ये बी बाहर आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए और बी बाहर, बी लॉग ए। क्या ये ऑप्शन बी लॉग ए है? नहीं। क्या ये ऑप्शन बी लॉग ए है? यस। क्या ये यहाँ पे कुछ बन सकता है? ये प्लस में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए बी, इस प्रॉपर्टी से। ये डिवीजन में है। यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में तो मैंने कुछ बताया नहीं। हम यहाँ से इसको इस फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं। चलो वो लिख लेते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ मैंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पे जो मैं चाहिए उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि कुछ कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ आंसर तो बी हो गया। बाकी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कैसे वर्क अराउंड करती हैं वो चीज क्लियर हो गया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? सचिन, आई थिंक थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा। आई गिव यू 20 सेकेंड्स, इसको गो थ्रू कर लो 20-30 सेकेंड्स पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सॉल्व दिस वन। आंसर आ गया? ओके। सो 4 आया सबका, कैसे किया है वो बताता हूँ। तो लेट्स से
यू आर गिवन विद दिस लॉग ए बी। अब इसमें जब हम सॉल्व करते हैं ना, सो दिस बिकम्स ए टू द पावर पाई इज इक्वल टू बी। यही वैल्यू होती है, इसको हम इस कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, log x 16 इज इक्वल टू 2। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 क्या होता है, 16 इज ऑल्सो 4 स्क्वायर। अब इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर है ना सबको कि कैसे किया है? सचिन, सदानंद, अदिति एंड एवरीवन एल्स हु इज वाचिंग। आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सचिन अब समझ आ रहा है लॉगरिथम के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, कैसे करना होता है उनको? बेसिकली तुम्हें बस पता होना चाहिए कि लॉग्स के क्वेश्चन कैसे वर्क, कैसे कर खेलते हैं। तुम्हें बस बेसिक चीज पता होनी चाहिए जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताई। उसके पहले जो आइडेंटिटीज बताई, वो सारी चीजें तुम्हें कैसे आ रही हैं, कैसे हो रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए क्लास चाहिए होगी, तो मैं वो चीजें वैसे डेप्थ में नहीं बता पाऊंगा। बट ऊपर ऊपर जितना मैं बता पा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, उतना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सो दैट इट्स क्लियर, अ बिट क्लियर फॉर यू, पहले से ज्यादा समझ आ जाए चीजें। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, दैट्स गुड, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था, अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इट्स एन इम्प्रूवमेंट, दैट्स अ पॉजिटिव साइन। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो सब चीजों का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हम डोमेन की बात करेंगे तो हम डोमेन, या वाई नहीं, चलो एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। वाई बोल लो, एफ ऑफ एक्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, इट्स अप टू यू, बट एक्सप्लेन इजी हो जाएगा इसलिए मैं एफ ऑफ एक्स लिया। तो जब भी डोमेन की बात होगी तो हम यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, और जब भी इस रेंज की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया डोमेन और रेंज के बारे में क्लैरिटी। अब दूसरी चीज आती है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी। ये एक थीटा है। थीटा क्या होता है, थीटा इज एनी एंगल, ठीक है। थीटा बस वही होता है। तो हम इसमें जब साइन थी, लेट्स से यहाँ पे साइन थीटा वन थीटा बाद में लिखते हैं, या इसको बेस बोल लो या फिर बीसी बोल लो, चलो बीसी बोल लेते हैं। यहाँ पे हम जब साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, हाय आदित्य। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नथिंग बट ए बी अपॉन ए सी। मतलब इसका मतलब समझो, साइन थीटा क्या होता है, थीटा के अपोजिट वाला जो साइड है वो, और ये हाइपोटेनस, ये दोनों चीजों का रेशो, ये रेशो ही तो है। इसको मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, रेशो ही हुआ ना ये। ओके, तो हमने साइन थीटा लिख दिया। कॉस थीटा क्या होता है, इसके साथ वाला साइड बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा क्या होता है, दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो साइन थीटा इज नथिंग बट ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, यहाँ पे बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ठीक है, तो ये ए सी और ए सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज क्या है, इसके अपोजिट वाला साइड डिवाइडेड बाय इसके साथ वाला साइड। या तो ये समझ लो या फिर ये समझ लो, दोनों चीजें सेम ही होती हैं। अब इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज थीटा, दिस इज हाइट,
दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, राइट? इस थीटा के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय एच। एच है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है? कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बी बाय एच। आई एम नॉट श्योर इफ दीज मैनी काइंड ऑफ डेप्थ वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट या इफ टाइम है हमारे पास तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसे अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं, ये पता हो तो इट्स बेटर ओनली, नहीं पता होने से तो बहुत अच्छा होता है ये, राइट? अब यहाँ पे एच बाय बी, राइट? तो ये एच बाय बी हो गया। आई हैव क्लोज्ड योर कमेंट्स। Some people have curly brown hair through proper brushing. Ihan, it's better if you don't mug up things like this. तुम चीजों को जितना conceptually समझोगे उतना easy होता है उनको solve करना। concepts clear हो उतना easy होता है वहां पे जाके चीजों को करना। ये जो shortcuts और ये जो चीजें लोग use करते हैं, they are not relevant or not good in maths. तुम यहाँ पे पूरा कनेक्शन बना सकते हो, हर चीज को कनेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे एक तरीका है, यहाँ पे एक तरीका है, तो वो इजी हो जाता है चीजें समझना। क्योंकि ये जो तुमने लाइन बोली, लोग ये लाइन याद करेंगे, अब वहां एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया, तुम उस क्वेश्चन में पहले ये लाइन याद करोगे, फिर वो लाइन के अकॉर्डिंगली चीजें यही लिखोगे तुम, और फिर ये लिख के फिर सॉल्व करोगे। उससे अच्छा है तुम जो बीच वाला स्टेप है ये लाइन याद करके लिखने वाला, वो हट गया है, तुम चीजें कंसेप्ट क्लियर करो, यहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली इसको लिख दो, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं आदित्य, रिकॉर्डिंग देख लेना उस क्लास की। सो रेंज देखना है इस फंक्शन का, तो अब साइन एक्स का जो फंक्शन होता है उसका बेसिक ग्राफ समझ लो, क्योंकि अब मैं इसको अगर पूरा रेंज और डोमेन कैसे इसके ग्राफ बिल्ड होता है हर चीज अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो दैट विल अगेन रिक्वायर वन क्लास। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरह तरीके से चलता है, ओके? सो ये जो रेंज है ये हमें वाई एक्सिस के अबाउट ही निकालना है। सो दिस इज वन एंड दिस इज -1, तो वैल्यू आएगी -1 से 1। इसका जो रेंज आएगा दैट विल बी -1 से 1। कूल, लेट्स मूव अहेड, ट्राई दिस वन, दिस इज अगेन अ लॉग का क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का वो बहुत बेसिक पार्ट था जो मैंने भी एक्सप्लेन किया है, उसको बहुत अच्छे से तुम राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम, या एनी टाइप ऑफ एग्जाम भी छोड़ दो, दैट इज समथिंग विच इज रेलिवेंट टू यू इन वट एवर यू विल डू, यू विल यूज योर ट्रिग्नोमेट्री in one or other manner, same as algebra. You will use these things in one or other manner for sure. Try this one. Okay. सचिन का क्या है? सी, सॉरी बी, ओके। आई थिंक सचिन यू आर एंजॉइंग लॉगरिथम क्वेश्चंस नाउ, तुम्हें समझ आ गई चीजें। सो द क्वेश्चन इज log 3 1/27, ठीक है? 27 क्या होता है? 27 इज 3 क्यूब, सो दिस इज log 3 1/3 क्यूब। यहां से अगर इसको क्यूब को बाहर निकाल लो, क्योंकि 1 क्यूब इज 1, तो ये पूरा ओवरऑल क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब बाहर निकालो तो दिस बिकम्स 3 log 3 1/3, राइट? 1/3 is what? 1/3 can be written as 3 की पावर -1. So this becomes what? 3 log बेस में 3, 3 की पावर -1। यहां से फिर -1 बाहर आएगा, -1, 3 log 3 3, ये 1 होता है। So this becomes what? -1 multiplied by 3, which is -3. So answer is -3. Sachin, this question is for you. Are you understanding logarithm or not now? Are you able to solve the questions in one go or not? सिली मिस्टेक्स आर ओके, सिली मिस्टेक्स एक तरफ, बट उसके अलावा तुम चीजें सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं?
Cool. So let's move ahead. So now we have algebraic identities going forward. So ये कौन सी आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आई विल एक्सप्लेन यू. ट्राई दिस वन. बेसिक क्वेश्चन है आइडेंटिटीज पे. नो वरीज आदित्य. बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको तुम अच्छे से समझ भी लोगे ना. आज की मैराथन के स्टार्टिंग के अभी तक जितने क्वेश्चन थे तुम अच्छे से समझ लोगे तो यू विल स्टार्ट लविंग अलजेब्रा फॉर श्योर. बिकॉज आई हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस, दे आर good for concept building. There are some questions gonna come up which are good for solving purpose for everything to up for basically application of the concepts that you have gone through so far. So they are mixture of everything in these questions. So it's good if you listen and you try to like solve these. Okay. ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया. a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट a प्लस बी, a प्लस बी. अब इसको मल्टीप्लाई करना है. ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो ए बी, फिर बी को ए से करेंगे तो ए बी, फिर बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर. सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सो यहाँ क्या, ये क्या हो गया, इसका पूरा जब ओवरऑल जब ओपन करते हैं इसको, इस ब्रैकेट को, तो यही बनता है राइट. तो यही एक आइडेंटिटी हो गई. सिमिलरली अगर तुम ए माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए करोगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, सो दिस अगेन बिकम्स ए स्क्वायर, ए ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी, फिर ए को बी से करोगे तो माइनस ए बी, फिर दिस बिकम्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी इज प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज पॉजिटिव नंबर. सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इस वाले का आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द एन आइडेंटिटी. ओके, ये एक आइडेंटिटी ये है. अब ये आइडेंटिटीज आई कैसे, आई नॉर्मली है. लेट्स से तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं ए और, मतलब एक ही नंबर है, उसको दो बार तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो. दिस इज व्हाट ए स्क्वायर. अब इसी ए स्क्वायर में तुम ए फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ए क्यूब राइट. फिर अगर तुम ए क्यूब में ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए की पावर 4, तो ये पावर बढ़ रहा है राइट. तो हम भी यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, यही वाली चीज अगर मैं ऐसे कंसिडर कर दूं तो यही चीज बनेगी. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे ए को मैंने ए प्लस बी कंसिडर कर लिया. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कंसेप्चुअली. ओके, लेट्स मूव अहेड, ट्राई दिस वन. ओके, एवरीवन गॉट डिफरेंट आंसर्स क्या. अच्छा, तो पहले के आंसर्स हैं. ओके, आदित्य सी कैसे आएगा बताओ. लेट्स से यू हैव टू थिंग्स, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. इनको मल्टीप्लाई करना है तो ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आया. ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए बी आया. माइनस बी को ए से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी आया. क्यों, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव बी बी. तो साइन को देखो, तो साइन पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव. नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज व्हाट, नेगेटिव. पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज व्हाट, नेगेटिव. नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. ये चीजें पता है. अगर ये चीजें क्लियर हैं तो फिर ऊपर वाला इजीली समझ आ जाएगा. तो यहाँ पे क्या है ये,
पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये मैंने बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा ये वाला चीज। सो दिस इज दिस थिंग, देन माइनस बी प्लस बी, इसका नेगेटिव बनेगा, बी मल्टीप्लाइड बाई बी इज बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो प्रॉपर्टी बना या जो आइडेंटिटी बना, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, सो इसका आंसर जो आएगा दैट इज बी अगेन। आदित्य गॉट इट? इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट्स पे पूछ लेना, ये बता देना, ये वाला सॉल्व करो। इसके बहुत तरीके हैं, बहुत मतलब लेजिट बहुत तरीके हैं, लेट्स सी कौन कैसे कर पाता है। Let's see who gives the answers first for this one. It's not a competition, but yeah, I just want to check how you're doing. And if possible, chat पे लिख भी देना कि कैसे solve कर रहे हो। I'm going invisible. Okay, I think you guys solved it. I'll wait for 30 seconds more. उसके बाद फिर मैं solve करता हूँ। ओके आदित्य, स्क्वायर मेथड्स नितेश, ओके। सो लेट्स सी कैसे हो रहा है। सो आदित्य, यू डोंट हैव टू जस्ट गो इन एंड डू थिंग्स। एक सेकेंड। हाँ, सो यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक ऑफ व्हाट विल फिट इन या कैसे। यहाँ नॉर्मली तुम ये देखो, एक्स प्लस वाई ये दिया है और एक्स वाई ये दिया है। अब अगर तो यहाँ पे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। अगर मैं एक्स प्लस वाई को का होल स्क्वायर कर देता तो ये क्या बनता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये पूरा एक आइडेंटिटी ही होता है, जो अभी मैंने निकाला था, 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने एक चीज की थी, वही चीज होता है। तो यहाँ पे ये चीज हमें पूछा है, ये चीज गिवन है, ये अंदर वाली चीज भी गिवन है, तो हम क्या ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5, तो ये 5 स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो निकालना है। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 6 है। दिस इज 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12। So x square plus y square. So this becomes 25 minus 12. So this becomes 13. So x square plus y square की वैल्यू आ गई 13। Cool. Okay, next question. Right, Sachin. Okay. So we have to just expand this identity. This is again same question जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस पहले कराया था, आई गेस यहाँ पे कराया था, सी दिस वन। सेम चीज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, तुम कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हो और उस कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। सो Sachin, there are a lot of questions left. I don't have exact count right now,
There are 25 questions का one more PDF. There are some questions left in this as well. So exact number of questions तो नहीं बता पाऊंगा, अब 30 plus questions तो होंगे easily. Try this one. Maybe 50 questions भी हो. So I don't have the exact count. If you have something to do, you can do and you can rejoin. And बीच वाला जो part होगा तो वो you can watch later. Answers for this, guys? Okay. Yeah, आदित्य, कल का सेशन में मजा आया था ना? So we'll have more sessions like that. आज का भी सेशन बहुत लंबा ही है. तो क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है तो वी आर एबल टू डू इट अ बिट फास्टर, वरना क्वेश्चंस को टाइम लेना चाहिए. अभी आगे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कमिंग अप. x² - 16. ठीक है. अब मैंने कुछ देर पहले a - b a + b इसको a² - b² प्रूफ किया था. ये प्रूफ किया था. तो अगर मैंने ये प्रूफ किया था तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा. अगर a is equal to b तो b is also equal to a ना. Let's say if a is equal to b, so b is also equal to a. आगे से सही है तो पीछे भी से भी तो इक्वल होगा ही. तो यहां पे भी वही चीज है, आगे से ही आ रहा है तो पीछे से भी ये चीज आएगी. तो दिस इज व्हाट, दिस इज a² वाला पार्ट. दिस इज व्हाट, 4² को लिख सकते हैं इसको. ओके, दिस इज 4², so दिस इज b² वाला पार्ट. a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a - 4 b. तो यहां पे क्या आ गया? ओके, सॉरी. सो दिस इज x - 4, यहाँ पे a + b इस चीज में, तो ये आ गया x + 4. तो इसका आंसर ये हो जाएगा. सो दिस इज सी. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स. मतलब तुम एक बार चीजों को समझ जाओगे तो उसको कैसे एप्लीकेशन में लाना है, तुम वो चीजें हैं यहाँ पे. देखो, तुमने मैंने एक आइडेंटिटी देखी तो आगे से देखी, पर उसको अगर तुम पीछे से देखने जाओगे तो तुम उसको कैसे करोगे? ऐसे करोगे. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड और थिंक ऑन अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस. ओके, गॉट इट आदित्य? If yes, write down yes, and we are moving ahead. Hey, I'm back. Hope I'm audible. Ain't I? And my screen is visible as well. Hey, I'm back. Hope I'm audible. All right. So, you know how many questions have we done? I think Sachin was asking. We have done, I'll tell you what, 40 there, 30 + 30 is 60. 80 questions have been done already. 80 questions done. My screen is visible, right? This question is basically meant for what? The revision, nothing else.
You're on cube. With here only, right? ये वाला क्या है ना थोड़ी देर पहले. I think this is what you guys did. Now it is this one. So option C is correct here. All of you got that? No need to pay much attention to it. Let's go to the next one. These are algebraic identities. So a quick revision of all of it, 20 seconds each. Just a moment, I'm trying to connect my pencil. These are all done. कहाँ थे हम लोग? Tell me, where were we? मैं पीछे आके देख लेता हूँ मैं. X square minus 16 पे थे. This was done. This was also done. This is left, I think. Now it's fine. I think it's fine now. Try solving this. Till then, I'm trying to connect my pencil. Why it's not connected? Just a moment.
Okay, now it's visible. Cool. My pencil is connected. Everything is fine now. Apologies for, I think it's not even a delay. 30 seconds is okay, right? Chalo. So now we have this. Well, so in questions like this, as you see that we have x plus 1 by x given to us, that is 3. I told you in the previous class also, you just need to square and then subtract 2. That is what happens, right? You take the square of it. What exactly happens? This comes and then 2 also comes because 2 into x into 1 by x, this gets cancelled out. So it's always when you square and subtract 2 from it. So you get 7 as the answer, right? Because this 2 goes on the left-hand side, right-hand side, and we are left with 7. All right. Chalo, let's go to next one. Now everything is fine. 45 seconds for this question. Not more, not less. These are basic algebraic identities. Trinomial. See, you need to keep one thing in mind that here degree is 2. So whatever values we'll be getting x, y, and z, all will be raised to power 2, and we'll be having combinations of these as well. So we can see all of it, the combinations as well, and because it is plus everywhere, so I'll get plus. Basically, it's x multiplied by y, x multiplied by z, y multiplied by z. So everything is positive. So we'll go for B. Okay, if it was like x minus y plus z, then what's going to happen? In that case, I'll get x square plus y square plus z square. Now, minus 2xy plus 2xz minus 2yz. Do you see the pattern? So this is something, the pattern that I wanted you to understand. Even if the question is easy, it's basic identity, still you need to understand the pattern here. So minus came into places where we had y, right? Where we had y with something here and here. The y was not there. Both positives were there. So we took both positive. Is this clear? This is funny. Yeah, Aditya. Next one. This is basic stuff, but a lot of people mess up in that. So need to understand, I told you when powers are even, then a minus b, see, a to the power n plus b to the power n. If n is odd, powers are odd, then a plus b would surely be a factor. So a minus b is going to be a factor. We have a minus b, a minus b. There's not possible. There's not possible. There's not possible. मतलब ये भी a minus b into a plus b होगा और वैसे भी ये स्क्वायर में है तो पॉसिबल नहीं है. So out of these two, which one do we choose? As you see that b has minus along with it. All right. B has minus along with it. So here we have minus b. Now minus b when multiplies with b square, I get minus b cube. So minus b, I should have b square. So b square is here. Yeah, I'm getting it. It's here as well. I'm getting that as well. The problem is I choose A or B. So here I have plus AB, here I have minus AB. Now what's going to happen? When this AB multiplies with A, I'm getting A square B. This multiplies with minus B, I'm getting minus AB square. All right. Is that clear? And now this minus B is multiplying with A square. I'm getting minus B A square. So this gets cancelled out. But it's not happening in B case. So we'll go for option A. Is that clear, everyone? All of you got that? This is the in-depth algebra. When I teach in-depth algebra, I'll be teaching that how to derive this. But now I think you have got the idea. Moreover, if you are stuck in a question like this where you don't know the identity, let's say don't know the identity, okay, because you have exam in less than a week. So let's say don't know the identity, what will you do? If you don't know the identity at all. In that case, I'll give you a very simple basic technique. You know what you do? Use induction.
induction is something I taught induction in 2024 batch of CAT. I know what people told me that said because of induction we could crack 3 algebra questions in CAT. Seems funny, seems weird. So I normally teach it in the last leg, that is in October, because people, if they know it, they won't be studying anything else. But for MHCT, I'll just tell you, just assume you just put 2 values, distinct values. That will be a better idea. Same value आता है, distinct better रहेगा कि same में minus से 0 रहेगा. So you put a equal to 2 and b equal to 1. That's it. So if you do that, you should get 2 cube minus 1 cube. That is 7 is what you get. 8 minus 1 is 7. Just put the values here and see where you get 7. ये तीन तो वैसे रिजेक्ट हो गए थे. यहाँ पे देखते हैं. a minus b is 1 only. 2 minus 1 is 1. This thing should be 7. Is it? So a square is 2 square plus 2 into 1 plus 1 square. 4 plus 2 plus 1. Wow, that is 7. If you look at this one, 2 square minus 2 into 1 plus 1 square, you get 4 minus 2 plus 1. That is 3 only. So obviously, where we get 7 is the correct one. Option A. Is that clear? This is called principle of mathematical induction. Isn't this cool? बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, अभी एक बोर्ड का बच्चा आया था पाकिस्तान से हमारे पास. If you are there, bro, don't use this in your board, otherwise, they will deduct all the marks. Happened with me as well. I am great in mathematics, but I did not get marks in my boards. The reason is that I made too many generalizations and the board was not ready for it. But for competitive exams, this is going to help you a lot. Is that clear, everyone? Throw some likes, guys. Now let's go to the next one. This is a no-brainer question, 30 seconds, and tell me the answer. Simple. You'll get 1x squared, you'll get 2x, you will get 3x. So x squared plus 5x gonna be there. And 2 into 3 is 6. So first option. Cool. Let's go to the next one. 101 का स्क्वायर. बच्चे को पता है 1021 होता है. I don't think we require anything to do over here, right? और इसके थ्रू करोगे तो 2 into 100 is 200. 201 एंड में आना चाहिए. बाकी 10,000 तो आ गया. 10,000 आ गया. So option B. Let's go to the next one. Oh, so because I miscalculated, because I thought someone told me that this is what we have done already. You know how many questions have we done? You would be surprised to know. We have already done 100 questions. What kind of questions have we done? We have done some concept builders through which the entire algebra got revised once, all of it. We did easy questions. We did some moderate level questions. We did not do any difficult questions yet. So I do not know the exact breakup between these, but I think it must be concept builders would be like 40. Easy questions might be 20 and moderate might be 40. Or maybe this is 30, this is 30. So 40 concept builders, 30 easy and 30 moderate is what we have done already. We covered the algebra. Now we are going to do some properly moderate and difficult questions in the ambit of MSCT. I won't go to the level of CAT now. Okay. Yeah, done already, guys. Nobody can do it better. Nobody can do it faster. Let's go to the next one. So here we are. Okay. Expert series, 50 questions. थंबनेल में 100 लिखा है, बट आज मैं 150 करा के मानूंगा. भी 10 भी नहीं बचे. चलो अब करो. अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो MSCT में आ जाएंगे, देख लेना तुम लोग. आएंगे ही आएंगे. हालांकि ये MSCT के लिए मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है. You require not more than 45 seconds for this. A, C.
You can use this identity x plus y whole square is equal to x square plus y square plus 2xy. Where is Sadanand? Sadanand, you there? So you can solve it, right? x y की वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू पुट करो, निकाल दो. लेकिन इससे आसान एक चीज और हो सकती है क्या, कि x प्लस वाई और एक्स वाई 35 है, तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ. इतनी टेबल तो सबको आता है. 5 into 7 is 35. 5 plus 7 is 12, right? So I can directly see that happening. So 5 square plus 7 square is what I need. 25 plus 49, it's 74. So option A. Do it in whatever way you want to. Yeah, Sachin, I know why you're laughing. So now we have the next question here. थ्री की पावर्स में है, ब्रेक करो और आंसर निकालो. When the powers are in addition, you need to just multiply the bases. 27 is 3 cube. Power is subtracting, so it will be division. That is what. वैसे करने की जरूरत ही क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, मुझे करना ही नहीं चाहिए सब, ऐसे ही आंसर आ गया. So 3 to the power x plus 1 is equal to 3 to the power 3x minus 3. Bases are same, just equate the powers and get the answer. That's all. So 2x is equal to 4. That means x is equal to 2. Option B. All right. Cool. Next question. Maximum time should be 45 seconds. All right, very simple. Sum of n terms is equal to n by 2 into a plus l if first and last term is known. If not known, we'll use this. All right, there's also one more way which I discussed earlier, that the nth term here is 5n minus 1. How do I know it? I told you technique. Look at the gaps. The gap is 5, so put 5n. Now just need to know that if 5n, I'm putting 5n, then how much less is this? So if I put n equal to 1 here, I get 5. But the reality is 1 less than 5. So just put minus 1. That is how I calculate the 10th term, nth term quickly. The sum of n terms will be summation of it. Sigma of 5n minus 1. I told you how to break that. So 5 sigma n minus 5. Is that clear, everyone? Do you understand this? This is also one of the ways. So it will be 5 into n plus 1 by 2 minus 5n. Put the values, get the answer. Clear? You can go both the ways. 990 is the answer. Correct. Next. 10 seconds for this question. The technique that I made, it's not 990, it's something else. Let me put the values here. 20, 10, 50, 50. 5n common निकल जाएगा ना? 5n, 100, 100, 21 by 2, 15, 21. 1050 will be the answer, guys. Option D, not B. Next. सिंपल है, दो पार्ट ब्रेक किए, -5 -2, साइन को रिवर्स किया, 1 से डिवाइड किया. 1 डिवाइड क्यों किया? 1 इसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, राइट? आई टोल्ड यू अर्लियर. -7 in 2 parts, so the product is 10 into 1. -5 -2, reverse the sign, plus becomes minus, minus becomes plus, and divide by coefficient of x square. That is the best way to find the roots. Option A.
Is that clear, everyone? Cool. Let's go to next one. Yeah. हाँ, 1030 बोला मैंने. So by definition, this will be x will be 10 cube. That is 1000. इसका स्क्वायर रूट निकालना है. Is 100 into 10. 100 comes out 10. Left with root 10. What next? 103. मैंने क्या लिखा है? अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, पता है मैं ना बहुत अजीब सा हो गया हूँ. आई एम सो सॉरी गाइस. हाँ, सही है. सही है दोस्तों. ठीक है. आसान सवाल में मेरे को ज्यादा करने मन नहीं करता, तुम जानते हो, वो तुम लोग कर लोगे. तुम लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है. ये छोटे बड़े चीजें तुम खुद ही कर लोगे ना. मेरा काम है बस थ्योरम बताना. सो रूट 10 क्या होता है? रूट 10.3162 होता है. मल्टीप्लाई बाय 10 इज 3.162 होता है. So multiply by this, you get 31.62 as the final answer. That's correct. Next. मल्टीप्लीकेशन है. पावर साइड हो जाएंगे. 3 + 4 7. बाहर डबल है. 14 डिवाइड बाय 2 की पावर 10. अब डिवीजन हो गया तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 2 की पावर 4 जो कि 16 के बराबर होता है. You got the answer. Next. Time allowed 10 seconds. फीलिंग आ रही है मैराथन वाली? अदिति, अब समझ में आया कैसे 100 सवाल हुए हैं. A is the first term. R is the common ratio. N is the number of term, 10 minus 1. 2 into 2 की पावर 9 is 2 by 10 only. 1024 is the answer. अब 2 की पावर 10 1024 होता है. ये क्वेश्चन मैथ का बचा नहीं, जीके क्वेश्चन बन चुका है. पहले ही बोला था मैंने एक बार ये बात, है ना. नेक्स्ट. Put -2 here. 8 plus 6 plus 5 is what we get. That is 19. Next. $20 for this one. Okay, Aditi. Sum of roots. Alpha plus beta is equal to minus b by a. What is a here? A is 3. B is -9. So 9 by 3 is 3. Option A. Sadanand, you enjoying it? Let's go to next one. ये टाइमर 0 पे होगा, मैं आंसर बताना शुरू कर दूंगा. सॉल्व करना.
वैसे तो इन दोनों को सॉल्व करके गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 3 एंड वाई एज 2, बट यू नो व्हाट, ये करने की जरूरत है नहीं। मुझे 7 दिख रहा है। 7 होता है 4 + 3, ऐसे ही दिमाग में मेरे आया। और ये होता है 3 - 2। सॉरी, गलत कर दिया मैंने ये तो। कैसे गलत कर रहा हूँ मैं इतना ज़्यादा। दोनों को ऐड कर देते हैं। आई गेट 3x = 9, दैट मीन्स x = 3 एंड y = 1, राइट। सो 4 + 3 देखा मैंने, काम नहीं बना मेरा, मैंने 6 + 1 देख लिया। 6 + 1 और ये है 3 ओके, इससे हो रहा है क्या? 3 - 1 = 2, यह हो रहा है। तो ये देख के ही मालूम पड़ रहा है कि 3 और 1 का डिफरेंस 2 होता है, और 6 और 1 का सम 7 होता है। तो वैसे भी अगर आप देख पाओ जल्दी से तो ठीक हो जाएगा। सो 3 × 1 = 3। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, लॉग के अंदर लॉग, बहुत सारे लॉग्स हैं, सो आई एम गिविंग यू कंप्लीट 1 मिनट फॉर दिस वन। आदित्य, कैट में इतना क्विकली सॉल्व हो नहीं पाएगा। वैसे ये मैराथन सारे कैट वालों को भी देखनी चाहिए कि 9 महीने जो चीज वो शुरू करना करेंगे ना, आज से 3 महीने बाद, और फिर जब एक्चुअल कैट की बारी आएगी तो पागल हो जाएंगे। तो उनको मैं पहले ही ट्रेन कर रहा हूँ। एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पे ग्रेड स्कूल में, सबका आना चाहिए यार। पता है मेरे को चाहिए हर कोई टॉप 30 बी स्कूल्स में। तभी आएगा मजा जिंदगी का। इसमें क्या करोगे? पहले ये वाला 2 भेजोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में। सो log-3, log-4 x। ये 2 यहाँ के 2 की पावर 0 1 होती है। अब ये 3 भेजोगे तो log-x⁴ 3 गया इधर, 3 की पावर 1 3 होती है। फिर हम यहाँ पे 4 भेज देंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा। सो वी गेट 64 एज द फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन MSCT के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो अभी सामने आया है। ऊपर लिखा है डिफिकल्ट, देखो। 1 minute over. Sum of infinite GP is a/1 - r. A is the first term, R is the common ratio, and R is always less than 1. Sum of squares of its terms is 45. Okay. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो पहले जीबी थी ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर। अब इसका भी ये वाला, इसका सम बता रहा है 15, और दूसरा बोल रहा है कि A² R²। समझ में आ रहा है? A²R⁴ इसका सम बता रहा है 45। सो इन दिस केस फर्स्ट टर्म इज A², वेल कॉमन रेशियो इज R²। दिस इज व्हाट वी हैव विद अस, दीज टू, एंड वी कैन सॉल्व इट। गेटिंग इट? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया क्या करना है यहाँ पे? अब इसके बाद we have two equations, equation 1 and equation 2. I can just divide this second equation with equation 1, and what do I get? A²/1 - R² को मैं 1 - R into 1 + R लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना? बोलो जल्दी। डिवाइड बाय 1, दैट इज A/1 - R। अब 45/15 3 होता है, तो ये एक बार A कट गया, 1 - R यहाँ कट गया। नाउ आई हैव A/1 + R is equal to 3. Is that cool? A/1 + R मेरा 3 आ चुका है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू जो है वो 3R+1 है, या फिर मतलब जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। 3R+3 है, ठीक है। A की वैल्यू इससे आई है R की टर्म्स में, पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।
Is that clear? Are these steps clear to you? All of you? The steps are clear. Now, this is how I got the value of A in terms of R. I can do one more thing. I can take the square of this first expression. I'll get A square upon 1 minus R whole square. Which will this help me? No, Aditi. In finance, it might be required, but majorly it's stats. Okay. So if I do this, I get 225. Let this be third equation. Now if I divide, see, I'll divide 3 by 2, a square got cancelled out. I'll get 1 minus r square upon 1 minus r whole square is equal to 45 into 5, no? इससे मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी, यहां पर करूंगा a भी मिल जाएगा. Is that clear everyone? Now solve this. ये r के फॉर्म में आ चुका है, इसको सॉल्व कर लो, वहां और यहां पुट कर दो, you will get a. Clear? I'm erasing the previous steps, assuming that you have written it down. So 1 1 minus r square is equal to 5 times 1 plus r square minus 2r. Let's see. Quadratic equation बनेगी 5 plus 5r square minus 10r is what I'm getting. Okay, a lot of working. So 6r square minus 10r plus 4 equal to 0. Divide by 2, 3r square minus 5r plus 2 is equal to 0. Am I right? I am right. Now, यहां तक आने के बाद जो मैंने टेक्निक बताई थी जल्दी से स्क्वायर रूट्स निकालने का, उसको मैं बाकी मिटा रहा हूं. आई एम अज्यूमिंग यू हैव रिटन डाउन, राइट? क्या बताई टेक्निक मैंने? 3 और 2 का प्रोडक्ट है 6, -5 के दो पार्ट जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए वो है -3 एंड -2. ये करने के बाद साइन को रिवर्स कर दो, +3 एंड +2. फिर r स्क्वायर एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो अपॉन 3. So r is either 1 or 2 by 3. Now, one thing in the first step I told you that infinite GP का sum तभी होता है when r is less than 1. So this will be cancelled out. This will be selected. This is our guy. This is someone else's guy. Okay. So 2 by 3 is the value of r. Let's put it here and get the answer. So a upon 1 plus 2 by 3 is equal to 3. Clear? Got it? So a is 5. This one was a actually difficult question for MAHCET. Understood all of you? आया मजा? आदित्य सिंह फॉर कैट व्हाट्स डिफिकल्ट लेवल? अभी बताऊं? कैट में बताऊंगा. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. वैसे एक मेरे पास ये करने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे ना, तो MAHCET में अगर ये क्वेश्चन है तुम करोगे नहीं? भाई ये बताओ. अगले क्वेश्चन से पहले ये एक बात बताओ मेरे को. इसको इस तरह करने में 2 to 3 मिनट आराम से लगेंगे. 3 मिनट तक लग जाएंगे आप लोगों के. तो क्या तुम इसको करोगे MAHCET में? ये और नहीं? टेल मी. हाँ के, हाँ के ना.
एक काम देखो, MHCT में ऐसे सवालों को, इनफैक्ट कैट में भी ऐसे सवाल होगा, टीटा क्वेश्चन ना हो, कैट में या टीटा क्वेश्चन होगा ना, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी देखो मैं चीज आता हूँ, मैं स्किप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, तो A/1 - R है 15, और A² /1 - R² है 45। ये मालूम पड़ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन पुट कर देख लेते हैं। अगर ये 5 होता, ए, अगर 5 होता तो मुझे मिलता 1 - R की वैल्यू मिल जाती 5/15, दैट इज 1/3, मतलब R की वैल्यू 2/3 मिल जाती। और फिर मैं उसको यहाँ पुट करता, 5² 25, 25/1 - 4/9। ये सॉल्व करने में मुझे दिखाई दे रहा है कि 45 आ गया। बल्ले बल्ले हो गई, आंसर आ गया, 30 सेकंड में आंसर आ गया। अब मान लो यहाँ ना आता अगर, तो अगला चेक कर लेते। पर पहली बार करने में तुम्हें ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाता है कि अगले वाले में कम टाइम लगेगा। तो अगर पहला ऑप्शन ही ऐसा 5 है, अब एक बात बताओ, अगर पहला ऑप्शन 5 ना भी होता ना, अगर मान लो पहला ऑप्शन 5 अगर ना भी होता, तो भी मैं 5 ही चेक करता। तुम बोलो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि 15 और 45 में दोनों में ही 5 आता है, हालांकि 3 भी आता है ना, 3 भी आता है और 5 भी आता है। तो मैं 5 और 3 ही चेक करता सबसे पहले, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती, हालांकि हमेशा सही नहीं होगा ये, इसमें 7 8 कुछ भी हो सकता है ना, कि रेशियो ही बड़ा, आर की वैल्यू अजीब सी हो जाए, अतरंगी हो जाए। लेकिन आमतौर पे जब क्वेश्चन भी बनाता है तो कोशिश करता है कि सिंपल वैल्यूज ही हो। हाँ, अगर मैं एग्जामिनर हुआ तो अलग बात है, तो मैं कोशिश करूंगा सिंपल वैल्यूज कभी ना हो। लेकिन MSCT वाले तो यही चाहेंगे। डू यू गेट इट नाउ? ठीक है, चलो अगला करते हैं। आइज, व्हाट आइज? ओके, equal roots, discriminant must be equal to 0, that is b square must be equal to 4ac. Here b is this whole guy and c is this and a is 1। ठीक है, so -2 × 1 + 3k का होल स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स 1 × 7 टाइम्स 3 + 2k के बराबर होना चाहिए। यू कैन कैलकुलेट दिस, राइट? सो 4 टाइम्स 9k² + 6k + 1, 4 टाइम्स को मैं कैंसिल ही कर देता हूँ ना यहाँ, 4 टाइम्स इंटू 7 3 21 + 14k, ये 4 को मैं हटा दूंगा आगे पीछे से। ठीक है, हो गया काम। सो 9k² + 6k - 14, सो आई विल गेट 9k² -8k -13, यही मिलेगा ना? यही मिलेगा, हाँ जी यही मिलेगा, ठीक है। ओके, 9 13 सर, यही मिलेगा या क्या मिलेगा? चेक कर लो यार क्या मिल रहा है। मैंने क्या लिखा है मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा। 20/20 है ना यार ये, 1 - 20, ये -20 होता है। 29 सर 180 होता है। ओके, बस ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। -8 कैसे? दो वैल, दो दो पार्ट्स जिसका प्रोडक्ट -180 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? 18 और 10 होता है ऐसा?
18 और 10 होता है, तो -8 is 10 minus 18. What I told you, see here my technique is going to work a lot. First you break it down, then you reverse the signs. Plus becomes minus, minus becomes plus. So this plus becomes minus, becomes plus. Divide by the coefficient of the leading coefficient basically, upon 9 upon 9. So minus 10 by 9 or 2 is the answer, option B. Is that clear everyone? Yeah. अच्छा है ना? Next. A, B, C are in geometric progression, then log A, log B, and log C are in what? Nice question. Very good question. I'm giving you 1.5 minutes for this. मुझे 21 दिया, 14K को मैं 14 मान रहा था. सदानंद says AP. सदानंद बहुत देर बाद आंसर दिया. GP, what does that mean? That means B square is equal to AC. ये क्या हो जाएगा? If I take a log here, the log, I'll get 2 log B is equal to log A plus log C. Or I can say log B will be equal to the average of log A and log C. When it is the average, that means log B is the arithmetic mean of these two guys. That means log A, log B, log C are in arithmetic progression. Is that clear? A very nice question. Very nice generalization. All of you got it? Clear, everyone? Next. काव्य दे दो आंसर. अदिति से सी. कैसे अदिति? अब मैं बताऊंगा एक बहुत ही अच्छी बात. सुनना. देखो, इसका मतलब क्या है? ये है एक मॉड्यूलस, ये है एक मॉड्यूलस. मॉड्यूलस एग्जैक्टली होता क्या है? ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू. ऑल राइट. अब ये खिचड़िया का नाम है. ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. ऑल राइट. अगर ओरिजिन है तो ठीक है. मुझे बात बताओ, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और क्रिटिकल पॉइंट्स 3 और 5 यहां रख दूं, 3 यहां और 5 यहां, तो एक्स कुछ भी सकता है. एक्स कैन बी एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन.
एक्स कैन बी हियर, रीजन 1 बोल देता हूँ जो 3 से छोटा है, रीजन 2 बोल देता हूँ जो 3 और 5 के बीच में है, रीजन 3 बोलता हूँ जो 5 के से बड़ा है। कहीं भी हो सकता है, यस और नो, कहीं भी हो सकता है। ये बात सही है, हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर ये बोलता है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इज 2, मैथमेटिकली इट मीन्स द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 5 इज 2। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? आई रिपीट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से एक्स से डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस 3 इज डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 3? No. Mod of x minus 3 is basal distance of x from 3, and mod of x minus 5 is distance of x from 5. So इन दोनों का सम क्या है? Sum of the distances of x from 3 and 5 is equal to, या ना? एक बात बताओ मेरे को, और खुद 3 और 5 2 की दूरी पे है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो x है वो यहां कहीं भी घूम सकता है, ये उसका एरिया है, अपना इलाका है भाई, ठीक है? 3 और 5 के बीच में इलाका x का है, वो कहीं भी घूमेगा, कहीं भी कहीं भी घूमेगा। मान लो घूमते घूमते पहुंच गया यहाँ पे, अगर ये दूरी a है तो ये दूरी 2 - a होगी, क्योंकि अब 3 और 5 दूरी 2 ही है ना, कहीं भी जाएगा। ये दोनों हमारे हाथ 2 की दूरी पे हैं, इसके बीच में कोई पॉइंट घूम रहा होगा तो उसकी दूरी मेरे इस हाथ से साथ दोनों का सम तो 2 ही होगा ना हमेशा, कुछ भी कर लो। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 3 और 5 कहीं भी हो सकता है, और 3 और 5 के बिनो के बीच में अनगिनत वैल्यूज है। सो आंसर इज इनफाइनाइट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? The answer is infinite. अगर ये क्वेश्चन बोलता कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, तब आंसर 3 होता, 3, 4 और 5। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ये एक ऐसा सवाल है जो एक तो डिफिकल्ट भी है, दूसरा ये तुम्हें अगर आता है तब भी गलत मार्क करके आ सकते हो, क्योंकि तुम क्वेश्चन में देखोगे नहीं कि इंटीजर नहीं लिखा हुआ है, और तुम 3, 4, 5 सोच के और 3 को मार्क करके घर चले आओगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत करके आओगे, है ना? एग्जाम हॉल के बाहर निकले सोच के, यस मैंने तो आज जमनालाल बजाज में ही एंट्री होगी मेरी, ठीक है ना? पर बाद में मालूम पड़ेगा तुमने एक वर्ड देखना भूल गए थे कि वहां पे इंटीग्रल नहीं लिखा हुआ था। ठीक है ना? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन 2 लेवल पे है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। खत्म हो गया क्या? ओह, खत्म ही हो गया ये तो। 25। हम लोगों ने 125 क्वेश्चन कर लिए, और बीच में मैंने एक दो वेरिएंट्स बताए तो 125 प्लस क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे मेरे पास एक और पीडीएफ है, वो भी करा दूं क्या? 10:30 भी नहीं बजे। 25 मिनट में क्या क्या हो गया, ये सब कुछ हो गया। एक और है ना मेरे पास, है कि नहीं? एलजेब्रा 1 डन कर दिया, 2 भी कर दिया। 1 में हमारे थे 40 सवाल, हो गए। 2 में 40 सवाल हो गए, एट नहीं, 1 में 30 सवाल हो गए, 2 में 30 सवाल 60 हो गए, 3 में 40 सवाल 100 हो गए, और ये 4 में 25 सवाल 125 हो गए। ये इसका भी है। क्या करूं? एक और मैंने बनाया तो था पीपीटी, कहाँ है वो? लेट मी चेक। वैसे उसमें भी सवाल मतलब हैं, पर मतलब सारे टॉपिक्स जो हमने कराए वही सब सवाल हैं। बताओ, करना है तो करते हैं, वरना खत्म करते हैं। एज यू टेल, एज यू से। पूरे यूट्यूब के इतिहास में मैंने एक 100 सवाल कराने का रिकॉर्ड बनाया था।
कैट के लिए थे वो तो 12 घंटे लग गए थे। 100 नहीं, उसमें हम लोगों ने नहीं नहीं 12 घंटे थे तो 150 सवाल 170 क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पे। आई थिंक किसी ने देखा था, आई डोंट नो। नवंबर की बात है। और अभी 3.5 घंटे से कम में 125 सवाल, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ अलग बात है कि बहुत सारे सवाल आसान थे, पर फिर भी अपने आप में काफी मजेदार बात है। अच्छा लग रहा है मेरे को सोच के ये बात। तुम लोग ऐसा लग रहा है? करना है आगे कि नहीं करना? जल्दी बताओ। 150 पहुंच जाएंगे हम लोग। Same kind of questions. Same kind of, I don't think it's required anymore. This is more than sufficient. So then you were there. Okay. 12 hours cat marathon, हाँ। खत्म करते हैं इसको, अब इतना ही है। वो पीडीएफ में तुम्हें होमवर्क ले देता हूँ। आदित्य did not know my channel. Okay आदित्य। हाँ वो तब शुरू ही हुआ था चैनल। ठीक है। We have done every type of quiz. There nothing is left. I don't think you require anything else. कल क्या है? कल कौन सी क्लास है? कल भी मैराथन है ना, 4 तारीख को होना था एग्जाम, इन लोगों ने 6 कर दिया अभी फिलहाल। तुम लोग का देख लिया कब है, डेट देख ली? यस सदानंद, प्योर मैडनेस या फॉर 12 hours. We'll have that soon. Right now, I want to build certain educational products. So you remember Algebra? I'm gonna start building it in the month of June. Algebra 99 theorems का एक मैं ऑडियो विजुअल एक वो बनाऊंगा बहुत ही खतरनाक लेवल पे. So there are some theorems that are there. All ticket has not arrived. कल abstract reasoning है, खत्म करते हैं इसको फिर आज. Let it be. Tomorrow we'll see. I think yeah, tomorrow we'll catch up tomorrow. Bye bye. Good night. If you need more questions, you can go to the free tools on GRADSKOOL's website. I hope all of you know that about that. 8th April. Okay. So you can go there, and if you want to practice more and more questions, there are 34 Quant topics. All the questions are there. Even RC is there. So you can prepare from there. For now, let's call it a night. Good night, everyone. I'll see you tomorrow. Take care, you too, Aditya. Hey, Harsh, you were there. I think Harsh just joined. And we are going.